So let me check the group. The moment we are live on the group, then we'll start. We are already live, but it'll take time to reflect in the group. Yes, so we are there. Okay. Hi everyone, this is Sanjana Jain. Welcome to my beautiful group blah blah. And वैसे तो सारे ही sessions, सारे ही interviews मेरे लिए important होते हैं, but this one is so special because I'm going to interview my first pre-process trainer. So with all my heart, I welcome you, Sagar. How are you? Thank you so much, Sanjana. I'm good. How are you? I'm good and I'm really nervous and मुझे नहीं पता how to. This is the first time I'm really not able to express my happiness, my nervousness. I mean, like I might cry in between because this is like dream coming true. Okay, so since it's about your web series, so guys, सगार की वेब सीरीज आ रही है बहुत जल्दी, जैसा कि हमने पोस्ट में लिखा ही था. So beginning with the interview, the colors of rainbow. Can you tell us something about this new project? Why this name? What all, इसके बारे में थोड़ा सा viewers को. Definitely. Sanjana, according to the rules, I wouldn't be able to give out much till we actually get into this. But yes, there is so much behind the scenes that one will never know. One will never know because what one sees as audience, as normal audience, is the story. But Yes. behind the story, behind those pages of those 150 pages of screenplay that happens, there there are hundreds of stories behind it. So these sessions, something like a blah blah community where I can come face to face with you, and via you and this platform I can reach so many people. The story begins with the fact that I wanted to narrate human emotions in a different arena. Now, this is with respect to the rainbow community or the LGBTQAI plus community as we call it. लेकिन मुझे वो नहीं करना था जहां पर कमिंग आउट स्टोरीज, स्ट्रगल स्टोरीज, या फिर क्या दिक्कतें आती है ये दिखाने के, ऑफ कोर्स आती है, बट LGBTQAI plus community की जिंदगी सिर्फ struggles नहीं है. It's not only about that. There is much more to it. So what I wanted to do with this one is that इनके लिए अलग कथाएं मत लिखो, इनको अपनी कथाओं में शामिल करो. Just give them a place in your stories. And that is what is the attempt that Colors of the Rainbow is doing. If you see whenever you see this, whenever it is on air, you will get to know that one or two characters are are representatives of the LGBTQAI plus community. But if you pick that character up, and if it's a gay character and you put a woman in place of that, the story wouldn't change. The drama is not about this. It is like drama so called normal है, बस वहां पर कोई और है. जैसे दर्द LGBTQAI प्लस कम्युनिटी के लोगों को भी वही होता है चोट लगने पर, भूख उनको भी वही लगती है, ईर्ष्या उनको भी वैसे ही होती है. तो अलग इमोशंस अलग नहीं है, वो नौ रस अलग नहीं है. इनफैक्ट LGBTQ कम्युनिटी का जो फ्लैग है वो है रेनबो कलर्ड फ्लैग, लेकिन वो रेनबो के कलर जो है वो कोई हटके नहीं है, वो आपकी ही जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी से लिए हुए रंग है. So these things had to be told, and that's why this series. And also one more thing about this series is that the rainbow has 7 colors, but the LGBTQ flag has 6 colors. Because when उसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब ब्रिटिश एक बंदा था जिसने जब ये शुरू किया था, मिस्टर बेकर, when he started this community, उसने फुल फंडिंग किया था और वो फ्लैग्स खुद बना रहा था, वो सैटिन क्लॉथ लाके, लेकिन फंड्स कम पड़ गए वो 7वें रंग के लिए, और पहली परेड रुक नहीं सकती थी, वो स्ट्रगल रुक नहीं सकता था. तो उन्होंने बोला चलो 6 रंग का फ्लैग बनाते हैं, रेनबो कलर को और उसकी उस स्ट्रगल का सम्मान करते हुए वी हैव हैड दिस थिंग दैट इट्स 6 कलर्स. ईच कलर डिनोट्स एन इमोशन, and each color talks about human emotions in a way
that each story comes up with that color and that emotion and embraces. So these are 6 stories. They are entertaining. You don't. It is not. They are they are stories of humans. Humans could be of any form, whatever. Jitna classification aap karoge, it's like less. But then yes, it is not an LGBTQAI plus story. It is a story with characters who are LGBTQAI plus. So that's about Colors of the Rainbow. ओह माय गॉड! मतलब आई कैन लिसन टू यू। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ पूछूँ ही नहीं और आप बताते जाओ, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। बट यू नो मुझे ऐसा लगता है जितना भी आपने बताया, यू नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल टॉपिक। तो व्हाट मेड यू पिक दिस टॉपिक? बिकॉज़ दिस इज़ योर फर्स्ट वेंचर, सो हाउ कम दिस सेंसिटिव टॉपिक? It is. I think you have. I can personally say this to you because you have known me. आसान चीजें तो पसंद आती नहीं है हमें पहले बार, और फिर वो कहानियां कौन सुनाएगा? उन उन लोगों की आवाज कौन बनेगा जिनकी आवाज नहीं है, जिनकी कहानियां बताने वाला कोई नहीं है. I am going to. I actually started with 2 stories. There was a murder mystery that I'm writing a film, and it's called Judgment. And I'm not supposed to talk about it because it's still not signed and documented as yet. But yeah, that was actually my first project, simultaneously going on with this. फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान ये स्टोरीज आई, और फिर I thought ki let's start with the. It's always, as we say in training, it's always good to start with the difficult job first. Get done with it. Take all the brickbats, whatever comes your way, accolades, brickbats, whatever. Take it. Move on. Make art out of that. अब इसका भी जो feedback आएगा उससे भी कुछ art ही बनेगी, और we'll do the best. Wow. Okay, but since you know, it's been like I know you since 2009, and जितना भी हम contact में रहे, I've seen you. You know, आपने काफी सारे occupations change किए, then you know chose something else. So tell us something about your professional journey so far, considering that you have dwelled into so many occupations. Yeah, I remember as a youngster when I just started my career, my mother used to say, or somewhere she still says कि एक काम ढंग से नहीं करता, इसका मन नहीं टिकता कहीं पर, कभी ये करता है, कभी वो करता है. And today when I go for these functions and where you're invited as a chief guest or judge, जाते हैं और लोग फिर पढ़ते हैं, और फिर जिन चीजों के लिए रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स पहले बोला करते थे कि यार ये सही नहीं है, उन्हीं का गुणगान गाते हैं ये लोग. It's you're respected for that, for your so-called versatility, but it was not a conscious decision. It was, I think life is about journey of finding grounds. Life is about experimenting. Life is about, I mean, this period of lockdown and the virus going on couldn't be a better time to say and prove what I'm trying to say or have been trying to say throughout my life. There is nothing which is permanent. So anything that can be experimented with should be experimented with. Anything that you want to say, write, tell, do, you should do. So there is nothing like एक चीज. So I started off with teaching and then training, where I met you. I think 7 years. No, I don't know. More than that, ages ago, light years ago. I think 10-12 साल पहले. And then after that, I think I went on to academics. फिर मैंने voice overs किए. I did costume designing for a few films and Marathi serials and stage shows. After that, I went on to do. I've been a counselor as well. I've got myself certified as a counselor. After counseling, I dwelled into. I co-authored or researched for a cookbook in between for my ex-boss, and then was the deputy director and dean for an engineering management college. Then I was a HOD at a hotel management college. Everything. I just wanted to do something different, and thankfully life has been very kind. Opportunities आती गई, मैंने ना नहीं कहा. मैंने मैंने सिर्फ ये कहा कि कोशिश करते हैं. Let's try. I think if I fail, I will learn. If I succeed, then I'll move on. So that's the funda of life. So the journey, it's not conscious. It's just happened, and by the grace of God, I have been.
where I am today. Wow, and you know, let me tell you that Bonaita, you know her, like you know, हम सब साथ में थे. So Bonaita is saying why he doesn't want it to stick somewhere because he's always been one of those who loves to try new things and excel in it. So whoever knows you, Sagar, whoever knows you, knows कि आप कितने versatile हो, कितने अच्छे से जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आप वो कितने अच्छे से निभाते हैं. एंड आई थिंक what you have earned is just love. मतलब अगर मैं जितने लोगों को जानती हूँ ओशंस के हों या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो, अगर आप उनसे ये पूछोगे सिर्फ सागर नायक बोलोगे ना, वो बोलेंगे ओ ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, हिज लव. सो मतलब ओके. सो मूविंग अहेड, लाइक जैसे कि आपने बताया यू हैव बीन इनटू टीचिंग, यू हैव बीन इनटू यू नो यू वर in engineering college also. So this is like a sudden change. So what made Hmm. you take up a career change and move towards media direction and writing? Because this is different, very different topic, and the occupations or professions that you would, you know, पहले जिसमें आप थे. So, Sanjana, what happened was that again, as I said, opportunities came my way. A friend was, he came up to me and said कि एक उसकी कोई दोस्त है जो एक मराठी फिल्म लिखना चाहती है, या उसके पास एक स्टोरी है लेकिन वो कुछ उनको कुछ मदद चाहिए थी. So लॉकडाउन के वक्त जब कुछ करने को नहीं था, colleges had shut down and I didn't really have lectures. I helped in the dialogues of that movie. लेकिन क्योंकि वो बजट कंस्ट्रेंट्स थे तो फिर मैंने बोला कि चलो लिरिक्स भी लिख लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ. तो बात होती थी मीटिंग में, यार लिरिसिस्ट चाहिए, इसको अप्रोच करते, ये है, ओके ओके ओके. तो बिकॉज एज वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स आई वुड से चलो कल देखते, देन घर जाके रात भर लिख के कुछ लाता, फिर दूसरे दिन प्रेजेंट करता था, लोगों को पसंद आ गया तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये लिख सकते हैं. you until and unless you don't do, it's like cooking. जब आप पहली बार आप जैसे you are a very good cook and people praise, and I've seen that the all over the Facebook where people really love what you serve them. I think it's I think it's the love that one puts in what you do that makes things, the outcome is irrespective of good or bad. It's just pleasant. The experience is pleasant, and then when you look back at these things, it's nice. So it's like that कि कुछ करो अच्छा होगा तो ठीक है. So that's why I started writing, and that sudden change. And now अभी अभी लगता है कि यार there is so much to say, there is so much to tell, there are so many stories. So I'm trying to do that now. आई एम रियली एक्साइटेड जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग से बताया कि यू नो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो हैव इमोशंस, दे ऑल्सो यू नो फील पेन. सो राइटिंग एंड ऑल में जाके, बट आई थिंक क्योंकि you have tried so many things, so did you go ahead or have you received any formal training in media direction or script writing, और या फिर बस वो भी एक टैलेंट आप में पहले से ही था जिसको बस एक, अब वो कहते हैं ना चिंगारी लग मिल गई है और अब बस सगार is going to just excel in it now, or did you take some training? Everybody knows now. This is because there are so many people watching. I want to say that formal training is very important, and anything that you do, and because people have opportunities and people are very focused in our times. अगर मैं बोलता कि मुझे मीडिया राइटर बनना है तो लोग मुझे बोलते कि कोई कुर्ता पहनकर झोला लेकर कवि बनेगा, राइटर बनेगा, क्योंकि तब वो एक इमेज थी. Today these are high profession, highly paid jobs. In fact, I think I got paid the most in my life for writing than anything else that I have done. So it is one of the things that yes, it is. And it is also because after all these years people value you, and also you earn the value. It's a process, because with experience what you have to say and what you write increases. आपके my stories and my characters will talk more, are more profound, and will talk more sense now, because I think I have gained that sense over the years, and meeting people, experimenting with things, trying new stuff. Research is one tool that we use, and then
That's how it can be. Formal training is required, but I haven't had any formal training, nor did I have it when I started training you in Oceans Connect. You know how I became a trainer. I was sitting in the training room as a trainee, where in way back in 2005, and the lady trainer, Miss Asha Rao, she went on. She was unwell, and then she was obviously pregnant, heavily pregnant, and she had to take her long breaks. And I used to conduct the classes. Just it started with mimicking her, and then just putting in the research and do like. And the colleagues started enjoying it, and the training manager happened to see me. So there was no formal training. It's just luck, and this also. एज ए ट्रेनर आई हैव सीन यू मतलब आई स्टिल रिमेंबर मैं हमेशा आपसे बोलती जब भी मेरी बात वेन एवर आई यू नो सी यू मेरे को पहला दिन याद आता है ट्रेनिंग का हाउ आई वाज क्राइंग एंड यू वर जस्ट कंसोलिंग मी काम डाउन एंड योर सेशंस वर अमेजिंग मतलब यू नो देन मूविंग टू बनाइटा इज ऑल्सो वॉचिंग सो आई एम टेलिंग हर मतलब एक होता है ना कि प्री प्रोसेस ट्रेनर से आप दूसरे ट्रेनर के पास जा रहे हो आपको थोड़ा डर लगता है बट यू बीइंग सो लीनिएंट सो लविंग एंड बोनाइटा बीइंग सो स्ट्रिक्ट मतलब it was sudden change but the way you welcome trainees oh my god that is मतलब मेरे को ऐसा इतना क्यूट इतना लविंग इतना versatile trainer I have never seen I remember your dancing sessions as well wow it's like This is fun. best You're time of taking me back to 2005, no 2010, that area. don't say that because Bonita has already said why are you saying 10, 12 years back we are not that old we are still young so let's not Bonaita that is blessed with young, good looks. She will never look old. So she's the last person who should be worrying. She's blessed genetically. एक हमारी एक खेती उड़ गई है अभी 2-4 सालों में यहाँ पर हवाई जहाज आ गया लैंड करने के लिए. Oh God! Yeah, you see, जो भी लोग देख रहे हैं, they are just sending likes, hearts because you have created that atmosphere कि सबको बहुत मजा आ रहा है और अभी especially when lockdown के time पे सब पैक हो गए हैं, हर कोई या सबके पास हर चीज का सब्सक्रिप्शन है जिन दिन भर लोग मूवीज देखते रहते हैं पैक होके सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट India, especially after the lockdown, has moved towards web series as a prime source of entertainment. So, what are your views on the current projects that are streaming on various OTT platforms? इससे एक question मेरे को भी याद आया. I'll ask you after this. Okay. Answering this one, lockdown mein, yes, because entertainment cinemas and going to theaters was not happening. People moved on to OTT platforms. वैसे भी internet access बढ़ा. We are still not using the full potential of OTT platforms. But क्या हुआ है कि I think this is my personal opinion that we were not ready. We were not ready for the boom of OTT. So we didn't have quality. I'm not saying what is shown is bad. Nobody. I think good and bad are very respective terms. जहाँ भगवान को भी अच्छा है बुरा बोलने वाले लोग हैं वहाँ ये तो वेब सीरीज है यार हम लोग नॉर्मल इंसान हैं हमारी रचनाएं होती हैं हम we present honestly what comes to our mind in the best possible way. And it's a teamwork where the writer writes, the director directs, and the actors help him present with the help of a lot of technicians. सब अपना अपना best डालते हैं and the product which comes out is the best at that time. बहुत बहुत जल्दी हम reject कर देते हैं ये क्या है ये फालतू है ये. But there are months and months of research and work that has gone behind it. So that is easy. But having said that, even I'm a big critique in the sense that I don't look at personal likings like ये मुझे पसंद नहीं है इसलिए नहीं. Sometimes I think that यार सो रहे थे ये इतनी सी चीज कैसे भूल गए यानी you have to have the basic know-how of the medium. तो मेरे को वो चीजें लगती है कि OTT platform है इसलिए you can't take liberties. OTT platform है इसलिए you can't कुछ serials होती है जैसे कि I don't know they are it's better to watch some stupid soft porn rather than watching these
सीरियल्स, आई मीन एक वन लाइनर स्टोरी होती है और इसका, आई डोंट वांट टू नेम एनी प्लेटफॉर्म्स हियर, बट देयर आर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स व्हिच जस्ट केटर टू सच सब्जेक्ट्स की इनका होता है कि मुझे लगता है डायरेक्टर बोलता है अरे 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 7 मिनट की तो स्टोरी होगी, अभी कुछ करवाओ, अभी कुछ करवाओ, लड़का लड़की को पास ले आओ ये, एंड देन आई एम लाइक व्हाई आर दे डूइंग दिस? अर्लियर जैसे हिंदी फिल्म में गाना कंपलसरी होता था एक एक पॉइंट के बाद, वैसे इन ओटीटी सीरीज में ये कंपलसरी है कि कुछ हो, आग जैसे उसको कहते हैं. आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन टू दिस प्रोड्यूसर टू सेल माय प्रोस्पेक्ट था, उसको सुनाने गए थे, बोला वो बोला सर अच्छी है लेकिन इसमें आग चाहिए, आग. तो मैंने बोला भाई तुम जला लो अपने आप को, मुझे माफ कर दो. So these funny stories which selling web series is in itself एक बड़ी कथा होती है, उस पर एक फिल्म बन सकती है. लोगों के expectations, संजना, I'll tell you, you can't compete with that. No, but I'm sure आप क्योंकि आपने ये बोला है तो आप कोई ऐसा आइडिया इसके बाद जरूर लाओगे कि जिसमें आप ये बताओगे कि कैसे एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है और कैसे आग लगानी है और कैसे बचाना है. आग लगने से बचना. लोग there are like so I can't reveal much, but there are some songs which play a very important role in my web series. In every episode there are some songs from Hindi films which have had an impact on my life, so they are part of the story. But तो वो वही बोल रहा था कि यार इसके तो राइट्स के 22 लाख लगेंगे, तो इसको निकाल दो, तुम अच्छा सा कोई गाना दूसरा ले लो ना, कोई ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग. आई सेड सर आप सुन रहे हो स्टोरी, इसमें हम फोक सॉन्ग कैसे डालें? किसी नहीं नहीं इतने अच्छे कोली सॉन्ग्स हैं. सर कोली सॉन्ग कैसे आ सकता है, ये रोमांटिक सॉन्ग है, यहाँ कोली डांस नहीं हो रहा है. सो आई वाज लाइक, so the intellectual capacity of people is so restrained at times that you have to just salute their ignorance and say bhai sahab thank you, thank god I'm not like this, and move on. Oh God. Oh my God. तो मैं you have actually answered it so well, but मेरा भी क्योंकि आप already उस zone में चले गए थे आग वाले, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे because you are now into that zone. What do you actually think? जैसे आजकल मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी वेब सीरीज है जो आप अपने बच्चे के साथ देख सको, इनफैक्ट बड़ों के साथ भी. लाइक इंडिया में एक वो एक रिस्पेक्ट लेवल है कि अगर ससुर जी बैठे हैं या पापा जी बैठे हैं या मम्मी कोई भी बैठा है अपने से बड़ा, तो वी ट्राई टू अवॉइड. अब इसमें तो चैनल चेंज का भी ऑप्शन नहीं है ना. सो ये पूछो, पहले तो हम लोग आंखें मूंद लेते थे जब कोई पास भी आता था तो, एंड इट वाज द रिस्पेक्ट, लाइक वी लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन इफ टेलीविजन पे ऐसे कुछ आ रहा है. बट अभी यू वांट टू बरी योरसेल्फ इन द ग्राउंड नाउ. सीरियसली. आपको क्या लगता है कि मतलब इज इट सो इम्पोर्टेंट? सी आई अंडरस्टैंड हर टाइप की ऑडियंस है एंड दे नीड टू मेक सच सीरीज एंड सच सीन्स वहां पे होने चाहिए, वो डिमांड होती है स्टोरी की. बट यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू हर एक सीरीज में इस टाइप के चीजों की जरूरत है? मतलब आपको क्या लगता है, ये एक जस्ट ऑन अ कैजुअल नोट, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? Physical intimacy is a very beautiful thing between two people that love each other, or two people who want to love each other. I think it deserves a lot of respect and dignity when it is, जब वो दो लोग हम पर्सनल लाइफ में जब एक दूसरे के साथ आते हैं, and then there's a physical closeness that happens, that time there is it cannot be a 1 minute sleaze like it is sometimes portrayed. There is emotions, there is a lot of dil ka dhadakna, wo cheeze and that cannot be shown on screen. I think show ways, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो फूल ला और उनको कैमरा के सामने पहले जैसे करते थे. I'm definitely I'm not old school. If there is a need, I have myself done on screen nudity where it was required. It was the need of the story when I was doing this short film for a media college. But then वो आपका समझिए कि why are we doing this, why is this being seen or shown? I think if the physical proximity in itself
uh, overpowers the story that you want to tell, then there's a complete failure. Your story of love, if it's the story that you're telling, or of the romance that you're telling, if it requires to be shown, it has to Yes. be explored. And I think it is extremely beautiful and emotion. It cannot be ridiculed by the way most of the OTT platforms now portray it. So I think I'm not against it. I'm sure it can be shown, but I'm sure because it is art and it is artistic, I think when you look at it, nobody should shy away from it. I think वो हाथ पकड़ने में और एक hug में जो just smiling at each other, वो जो पहले हम लोग I remember, I don't know how many of the people watching this from this generation will know this, but वो स्कूल में एक दूसरे को कभी चुपके से भी देख लिया, वो वाला रोमांस जो था ओल्ड स्कूल, या फिर शादियों में जब जाते थे, when you're following the person, या फिर you want to give the मिठाई गुलाब जामुन देना है, जलेबी देनी है, तो उसके लिए आई थिंक दैट वाज रोमांस. ये सब चीजें तब नहीं थी प्रायोरिटी लिस्ट में. लाइक आई डोंट Yes. नो, ये ओयो कल्चर जिसको मैं कहता हूँ, ये बहुत बहुत बाद में आया हुआ है. तो अभी आई थिंक it's time that somebody takes it back there. I think somebody explores the beauty of romance again. I'm trying to do. I'm not saying that my web series will never have this or doesn't have it, but in fact in this web series, in one of the episodes, there is something which there is some nudity as such, but it is, when you see, and then I will face you again, in fact, after the release, and then we will get to that question, that why it is there, or why. And I don't think anybody will be in a position to ask me कि तुमने sleaze के लिए देखा है. I think I'm very careful. I have two kids who will watch this, so I have to be careful. फूल वाली बात पे सगार, यू हैव मेड एवरीवन लाफ. आई कैन सी द कमेंट्स, एवरीवन इज लाफिंग. मतलब सुपर्ब. सो बट आई मुझे क्या लगता है ना, जो आजकल के जनरेशन है ना, दे आर फार अवे फ्रॉम रोमांस. मतलब जो आपने बोला कि they don't actually feel what is the beauty of romance. It's just physical relation. You like it, you don't like it, and then you're over it. मतलब Hmm. वो जो ब्यूटी है, मुझे लगता है दैट इज एक्चुअली मिसिंग है. वो कहीं पता नहीं अब आएगी भी कि नहीं, बट लेट्स Hmm. सी कैसा क्या होता है आगे. सो आप I खुद think इतने these वर्ड. things हाँ जी, सॉरी. आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑल्सो, ये लोग जो कहते हैं कि क्योंकि यही बिकता है इसलिए हम ये दिखाते हैं, तो ये होता है कि ये किश्त जो पहले हम देते हैं, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ स्लीज दैट कम्स इन, इट इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग. इजी वेज आर वेरी एक्साइटिंग. ये जो वीकेंड पे रिकवरी करो अपने मूवीज की, वीकेंड में 100 करोड़ कमा लो, एंड देन द फिल्म इज जो है वो, इसके चक्कर में ये सब चलता है. और फिर जो रियल ऑडियंस होता है, लॉन्ग टर्म में किसको याद रहती है ये फिल्में लॉन्ग टर्म में. राइट. जैसे हमको अंदाज अपना अपना के, लाइक जो डायलॉग्स है कि क्राइम मास्टर गोगो जी आपका घाघरा, आज भी हम बोलते तो लोग हंस पड़ते हैं. तो ये हालांकि अंदाज अपना अपना उस टाइम में नहीं चली थी उतनी, बट आज वो कल्ट क्लासिक है. They didn't resort to any means or methods where there were two lead actresses and two happening actors, the Khans of Bollywood. They could have done so much. But ये बिना शर्ट उतारे, बिना ये सब किए हुए, तब अच्छी चली थी फिल्म. So और कल्ट क्लासिक बनी. Very true. Now, since you have moved to movies, so who are your favorite actors? And I would add why. Okay, actors. मुझे ना, so every time I'm asked this, I say that I have favorite characters, not actors. I think it's a chance. I think when you get somebody, मुझे विरासत की गहना याद है, तब्बू ने जो रोल किया. मुझे तब्बू नहीं पसंद है, मुझे विरासत में जो गहना उसके 15 मिनट में लास्ट मूवी के उसका एक जो रोल आता है, एंड देन शी टेक्स अवे द फिल्म अपना. या फिर आई लाइक कपूर एंड सन्स के, मुझे दादाजी पसंद है, ऋषि कपूर जी ने जो किया है इन कपूर एंड सन्स. फॉर मी these are actors who bring life to the character. Supporting cast बहुत जरूरी होती है, because lead cast को there is a lot of
backing that is given. In terms of writing, your lead is always made that's what they call heroes and heroines. तो उनको heroic nature में ही दिखाया जाता है. There is a lot of costume, makeup, सब चीजें उनके लिए best. उनकी entry specified होती है, उनका entry music, उनके songs. But there are character artists who do that. So don't have favorite actors. But yes, having said that, I'm a great fan of late Mr. Irfan Khan, and he is fabulous, and I think he has an impeccable sense of characterization in his portrayal of all the different cinema that he has done. And अभी मुझे तब्बू पसंद है बहुत. So yeah, these are good actors. There's a lot to learn from them. That's so true. कैरेक्टर ही मतलब कई ऐसी मूवीज भी होती हैं जिसमें आप चाहे मतलब आपका वो फेवरेट एक्टर भी हो बट उसके रोल से उसके बाद आपको नफरत होने लगती है कि ये ऐसा ही होगा. दे प्लेड सो वेल. संजना, मुझे तो बहुत बार होता है ये. मुझे बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि क्यों बनाते हो, क्या है, 2 टाइम का टिफिन मैं पहुंचा दूंगा, इतनी भूख मरी पड़ी है तुम, बट अच्छा काम करो भाई साहब, ऐसे मत करो. बहुत बार ऐसे लगता है. मत करो. एंड नाउ बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री देयर आर अ few people I know very closely of. My elder sister also, she's an actor, and then she's Atisha Tai. So Atisha Didi is also into this film industry. She has done a lot of films, and then we always see people who are, because of her I know a lot of people. And then when people do such stuff which is not suitable to their age or whatever, then we feel कि भाई चलो टिफिन पहुंचाते हैं इनके घर, भूखे नहीं है, कुछ भी करना है. Oh wow. So since you talk about characters and आपको लगता है कि characters बहुत important होते हैं, मुझे भी लगता है कि और हमारी audience भी वही कह रही है कि characters बहुत impact डालते हैं हमारी life पे भी और हम जिस तरीके से उनको देखने लगते हैं उस पे भी. So any one film that inspired you as a child or in your youth that actually helped you developing this passion for the cinematic world? हमारे वक्त में ना मूवीज देखना वाज अ प्रिविलेज. थिएटर्स में जाना तो वाज अ वेरी 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 डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट व्हेन वी दूरदर्शन होता था एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड संडे आफ्टरनून देयर यूज्ड टू बी अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स व्हिच वर शोन, जो दोपहर के आई थिंक 1-1:30 बजे आती थी. और उसमें ये सब न्यूज फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड होता था, और उसके बाद ये फिल्म आती थी which used to be Malayalam, Tamil, Telugu, Assamese, कोई भी cinema, but good cinema. I was in school, and I used to be called weird by my cousins that time because I used to enjoy watching that. And उसके चलते मैंने बहुत देखी. बहुत सारे के नाम भी मुझे याद नहीं है, but one film that stays with me always as a memory in the childhood is there are many international और बहुत बड़े बड़े नाम मैंने देखे, and I can say something to impress, but भाई मैंने चालबाज देखी थी थिएटर में, मेरी फर्स्ट फिल्म, और श्रीदेवी की, और मैंने वो देखी थी एंड श्रीदेवी की चालबाज देखी थी, and it has had an impact. There are so many names just for the heck of it. I could, ये movie मुझे बहुत अच्छी लगी, but I thought it was amazing. I thought कि एक तो वो I think I must have been in high school that time, और पेरेंट्स लेके गए थे, और फिर वो देखकर I was mesmerized by the power of like two identical looking people एक साथ है, और फिर जो करते हैं हंसाते भी है, रुलाते भी है. And that was my first stint with cinema. And I said ये करना है भाई, कभी चांस मिले तो ऐसे करना है. वो पर्दे पर लोग कितना प्यार देते हैं इन कलाकारों को. So I want to do this someday. So that's what. So Chalbaz has had that. It might not be the best movie to recommend on him, but because it was the first, it has had an impact, and it pushed me because it was the first movie I seen in a theater. I remember. Right, and जब भी, क्योंकि आपने उस टाइम की बात की, भी सब लोग समझेंगे पता नहीं हमारी एज कितनी होगी, बट पहले वेट करते थे हम लोग नेशनल्स पे, फ्राइडे सैटरडे को मूवी आएगी. और मैं बोलना चाहूंगी, मतलब हम लोग इतने, मैं और मेरे मॉम बहुत, हमें मूवीज का हम लोग चाय बना के रखते थे
अगर नींद आएगी तो पी के भागने के लिए, बट हमें मूवी देखनी है. सो I know. वो टाइम बहुत ही अलग था. एंड अभी आपने इतनी बात की. गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क. सगार इज देयर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. एंड इतनी सब बात करके, आई रियली फील हैप्पी. It's a wonderful place to be where you are at. But where does this journey now go from here? Sorry. I I didn't know how the journey was still here. ये इतना ये रास्ता इतना अनमैप्ड है मेरी जिंदगी, मेरे प्रोफेशनल लाइफ का, कि मैं जहाँ पहुंचा हूँ और मैं कभी मुड़ के देखता हूँ पीछे तो लगता है कि यार ये कहाँ आ गए. ये कभी डेस्टिनेशन नहीं था और यहाँ पर कभी सोचा नहीं था कि ये करेंगे. आई ऑलवेज लाइक, तब जिंदगी में लगता था कि एक्टिंग करेंगे, बट एक्टिंग से मन उब गया. जो काम मिला सीरियल्स में जो किया उसमें मन उब गया और फिर ये करने लगे. एंड नाउ आई फील दैट प्लानिंग इज द, you should have conviction in the direction that you walk. मंजिल अपने आप बन जाती है. यहाँ राइट एंड लेफ्ट नहीं होता जिंदगी की राह में. आप सीधे चलो, रास्ता अपना रुख खुद मोड़ लेता है. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. आपने जितनी बातें बोली उसमें से आधे से ज्यादा प्लान नहीं थी. लेकिन जितने आपने कुछ कुछ बीच में ना जो स्टेटमेंट्स बोले हैं ना, मैं इंटरव्यू दोबारा देखूंगी. आई विल राइट देम समवेयर एंड आई एम गोना यूज देम. एंड जैसे वो लिखते हैं ना कि हम कभी कोई कोट लिखते हैं, हम वो मेंशन करते हैं किसने लिखा है. सो आई विल मेंशन योर नेम. सुपर. मतलब आई एम रियली हैप्पी. वाओ. सो ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन. व्हेन इज रेनबो रिलीजिंग? We all know that all the shootings have been stalled in Maharashtra because of the current scene. We were supposed to go on floor. I have thankfully got a very nice producer and actors who are going to be part of this. At this moment, I'm bound by contract where I can't reveal many things. But if it was not the second strain of this virus, we would have been in the last stage of shooting by now. But inshallah hoga sab theek. And I'm a very positive person. I know that everything happens for a good. I think this time is the जहाँ हम पढ़ रहे हैं, हम बैक एंड वर्क कर रहे हैं. प्री प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें होती है जो कर रहे हैं. हम अभी चांस मिला है तो स्क्रिप्ट को भी देख रहे हैं कि डायलॉग्स कैसे और उम्दा हो सकते हैं. How can we better ourselves as technicians, as storytellers. And release date, I'm optimistic about releasing it sometime in the third quarter of this year. However, Mother Nature will always say that I'm greater than you, and in some way or the other. So I leave it to that we have a project at hand. We have the sources to make it. The moment we get a go ahead from Uparwala boss, we will shoot it and release it soon. Okay, so now since you have talked so much, people are really curious to know the cast also. Can you tell us something about it? Hmm. And unfortunately, see, what has happened is that the cast will now be will have to be tweaked and changed a little. We have some really good names on board, but because of the dates that will be clashing now, अभी जो एक महीना शूट नहीं हो रहा है, इसके चलते जब नए dates आएंगे, तो if I give out somebody's name now, until and unless I have new contracts and new dates from the artists, and they say that they are free now, क्योंकि सबके काम अभी if they have given me the dates of, ऐसे नहीं होता कि एक महीना शूट नहीं हुआ है तो सब एक महीना आगे जाएगा. नहीं, उन्होंने जो मई के डेट्स है वो मई में किसी और को दे दिए होंगे, तो मई का शूट उनका पहले हो जाएगा. एंड इफ आई वांट टू शूट इन मई, then I may not be able to work with that artist. So everything will be officially announced. And one thing I guarantee you, all my blah blah brothers, sisters, that blah blah will be the first platform where any kind of announcement of this project will happen. The first interview for this project has happened on blah blah, because I want to mention here Neil Shri and Sanjana.
because they started this when morals were going down, when depression was setting in, when people were not sure about the way ahead and stuff. This is a big thing, to gather people and to be with them. I'm not sure how many of us are technically that sound to understand कि यहाँ पर ना वो मॉनिटर वाला फीलिंग होता है, जो टीचर्स भी गुस्सा करते हैं और स्टूडेंट्स भी गुस्सा करते हैं उन पर। तो वैसे वाला एडमिन का वो जॉब होता है, जहाँ पर उनको पेज भी मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को संभालना भी पड़ता है। उनके लिए सागर नाइक एक राइटर या डायरेक्टर है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सागर नाइक जितना ही हर एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। इनको संभाल के रखना, एंड आई थिंक द गर्ल्स ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, बिकॉज़ दे आर मदर्स एंड बिकॉज़ they are beautiful souls. They're just, because I know them personally, they have bound people together. They have the ability to bind people in a way of a family together. And hats off to y'all. I think this is one of the best things that I I don't want you to cry, Sanjana. This is just genuinely what I'm trying to say. Is like, I mean it. I mean it. I'm proud of y'all. I'm really Everybody is sorry. going to hate me if you do this. No. एक्चुअली कभी भी जो भी जिनका भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, और पर्सनली भी हम, और ऑब्वियसली मैं और नील श्री हम दोनों कनेक्ट करते हैं। मतलब नील, आई एम श्योर नील श्री भी रो रही होगी इस टाइम। एक्चुअली तारीफ सब करते हैं बट समथिंग कमिंग फ्रॉम योर ट्रेनर, मतलब मैं आपको आई सीरियसली कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। एंड when your trainer tells you that he's proud of you, matlab this is something, I'm literally shivering, matlab I just can't. I'm really sorry, this is like, this doesn't happen And she, often. no, I'm sure this is because the emotion is very pure from your end too. ये मेहनत है और इसकी सराहना नहीं की जाएगी. If we don't appreciate good work, there will be no good work happening. We have to encourage all the people here that the work that these girls are doing is excellent, and they deserve a pat on the back, because there is nothing that we gain out of it in terms of apart from mental satisfaction and connecting people. This is a platform for bringing you all together, all of us together. I think आज जितने लोग सुन रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं, या ये हम एक दूसरे से interact कर सकते हैं virtually, is because of this. I somewhere Jayashri, Neel Shri and Sanjana both have come together and done this selflessly. And I think I if I don't want, I don't generally take credit for things, but here I would like to take credit, क्योंकि इतना अच्छा है सब, तो मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगे कि मेरी बच्चियां हैं और and they are doing such a fabulous job. And कुछ, I think purity of sorry, is the purity of emotion that is there, and I just have so much love for all of you. Just thank you for being what you are, and continue to be that. Don't cry, beta. I don't know, matlab this is live. This is like first time ever. I know she's on live, people, and this it can't get truer than this. I think it is like one of the most genuine platforms where we don't hold back and we don't abide by the rules के live है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये है, ये platform है, इतना सच्चा है कि यहाँ पर जो है आपके सामने. Okay. A big tight hug, Sagar, from me and Nilshri, because love you so much, and anything that you, let's just move on, or else शायद मैं एकदम ही shatter हो जाऊँ और रोने लग जाऊँ. So we'll keep this for a personal talk moving on, where we will rekindle our old memories and we will talk about it. There is so much to smile about कि ये मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों के लाइफ में
आंसू आए तो वो मुस्कुराहट का दामन पकड़ के आए, खुशी का दामन पकड़ के आए. So they all, even if there are tears, they should be holding hands with joy only. So a lot of love to you all. Thank you. And any piece of advice that you want to give to all the media aspirants who are a part of blah blah, or since we'll be uploading it to YouTube also, so कोई ऐसी एडवाइस, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई किए हैं एंड आई हैव सीन योर स्ट्रगल, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, आई नो दैट, बट कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहोगे जो हार्ड वर्क इज देयर, आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? Belief is one thing. I say that you should do your job. Hard work आता ही है. I think there is nothing in life that you can achieve without hard work. Uh, Something that I have believed in कि रात को जब आप सोने जाते हो तब आप आंख मूंदते हो, उस आंख मूंदने से पहले दिन का एक ब्यौरा, there's this like this flash that goes in front of your eyes about what happened since you were up. At that time, if you have done whatever you set out to do honestly, if you ask for forgiveness if you have failed at times, if you promise yourself that tomorrow when I wake up I will set this right, there is nothing that can stop you. There is nothing that can stop you. There can be things. So कभी कभी लगता है हमने कुछ शुरू किया है, फिर वो एक चीज गड़बड़ा जाती है, उसके चलते दूसरी चीज गड़बड़ा जाती है, and you're like, oh God, what is happening? And you just seem to lose control. और ये personal life में हो, professional life में हो, कहीं हो. मैं लोगों को बहुत like I do a lot of counseling and that time I tell people कि घर गंदा हो जाता है तो आप नया घर नहीं खरीदते हो, आप साफ करते हो, आपको टाइम लगता है. ये जिंदगी भी उस कबर्ड की तरह है जिसमें हर बार आप कुछ करने जाते हो, एक कपड़ा निकालते हो, दो की तह उल्टी सुल्टी हो जाती है, चीजें उलट पुलट, बट जिंदगी वो तुम्हें एक इतवार देगी, वो मौका देगी, वो फुर्सत के लम्हे देगी जहां आप वापस अपना वो कबर्ड समेट के ठीक से लगाओगे. Life will give you an opportunity to set things right. If there are no struggles, there is no fun. I think इसलिए हम लोग जाते भी है. When you even go for these fun fairs and other entertainment parks, तब भी आप जाते हो तो ये ऊंची वाली राइड्स और ये you need thrill, you need जिंदगी खुद एक fun fair है, जिंदगी खुद एक entertainment park है. I think you will have these ups and downs, and these are something that troughs and crests of life, emotional setbacks, professional setbacks, or whatever will happen. Bounce back. Believe in yourself. Look in this mirror. Tell yourself that you may not be the best, but you are the best version of yourself. Convince yourself that you are the best version of what you are. तो वो सब ठीक है. इससे अच्छा या उससे बुरा नहीं होता कोई. सागर नाइक ऐसा ही हो सकता था जैसे आज है. इससे अगर कुछ और हो सकता था तो वो शायद बेहतर होता या बुरा होता, I don't know. But at this moment, this is the most genuine version of myself I am presenting in front of you. I have followed this. I would like people to follow. And one more thing that I have followed, I think I should tell you all, is that which I tell all my students every time is, don't wait for others to appreciate you. Appreciate yourself. You think you have done a good job. I think that today I could talk to Sanjana and give a very nice interview. I will go and appreciate myself. मैं अपने लिए एक मस्त अदरक वाली चाय बनाऊंगा and I will tell myself, सागर वाह क्या इंटरव्यू दिया है, चल चाय पिलाता हूँ तेरे को, मैं खुद ही पीता. And I actually do this. I treat myself with a good cup of tea. I sit down and I tell myself, कभी कभी इतने सालों के बाद जब आप वही चीज करते हो, ट्रेनिंग जाते हो, लोग नहीं बोलते हैं कि आप अच्छा काम करते हो, because it's expected of you that you're a good trainer. So until and unless somebody new comes, तो मैं वापस आता हूँ when I see myself in the mirror after I come and I tell Sagar, what a fabulous session, yeah, good job. I tell myself, I literally tell myself that in the morning when I get ready, नई टाई पहनी है, कहीं जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, वाह अच्छा लग रहा है यार, किलर लग रहा है. You have to tell. Praise is essential. You have to tell yourself that. And I think it's थोड़ी सी पागलपंती है ना जो जिंदगी में है, यही आपको sane बना के रखती है. This little madness keeps you sane. So retain that madness.
Wow, this I'm gonna follow. मतलब मतलब अभी आप तो उस प्रोफेशन में हो that you go out, you meet people and then you have to and मैं ऑडियंस को भी बता दूं सागर इज अ फैबुलस ड्रेसिंग सेंस. सागर गाते बहुत अच्छा है, सागर डांस बहुत अच्छा करते हैं, सागर एक्टर बहुत अच्छे हैं, सागर काउंसलर बहुत अच्छे हैं, ट्रेनर बहुत अच्छे हैं. आई थिंक आई कीप ऑन काउंटिंग एंड दिस वोंट फिनिश. So Sagar is so versatile, and what you have said at the end, I think हर किसी को ये बात फॉलो करनी चाहिए. कोई तारीफ करे चाहे ना करे, आप खुद की तारीफ करो. और जब तक आपको नहीं लगे कि आप बेस्ट अपने हो गए, तब तक हार्ड वर्क करते रहो. जिस दिन आपको लगे आप बेस्ट हो गए हो, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड थिंक ऑफ अ बेटर वर्जन ऑफ बेस्ट. अगर आप हो सकते हो तो. Truly, I think, और ये every day I think we are going on a very philosophical note, but the last thing that I want to do we have any questions, or we can wrap up now, Sanjana? नो, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. जिन Okay. कुछ भी आप बोलते हो तो एक हार्ट आता है पंप होके, बस वही आ रहा है इतने टाइम में. क्वेश्चंस तो एज सच नहीं है. I would we would like to I would like to say this, recite this poetry जब मैंने बोला, एक बहुत पहले लिखी थी, if you allow me, एक मैंने प्लीज प्लीज so प्लीज. ये मैंने सोचा था कि मैं इस लाइव सेशन में बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ कहना होता है, तो वो लेखक का सिमट के आता है अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में. तो आई थिंक दिस सम्स अप माय life in general, because this interview was about me and my work. इस कविता का नाम है, मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी, इसका नाम खुशी और आंसू है. और मुझे जितना याद है मैं बोलूंगा. भागती दौड़ती इस दुनिया में, भागती दौड़ती इस दुनिया में जज्बातों का मेला लगा था. भागती दौड़ती इस दुनिया में जज्बातों का मेला लगा था, और इस मेले में कहीं पर खुशियों का भी एक ठेला लगा था. और इस मेले में कहीं पर खुशियों का भी ठेला लगा था. ढूंढने पर दुकान नजर आई, ढूंढने पर दुकान नजर आई, सस्ते में खुशियां ले लो भाई. चिल्लाकर दुकानदार कर रहा था इश्तिहार, मैंने भी सोचा हुआ हूं एक बार. दुकानदार को आवाज लगाई, पूछा एक खुशी कैसे दी भाई. दुकानदार को आवाज लगाई, पूछा एक खुशी कैसे दी भाई. 100 आंसुओं की एक खुशी है, बोल पड़ा वो हंसता हंसता. 100 आंसुओं की एक खुशी है, बोल पड़ा वो हंसता हंसता. मैंने भी जोर लगाकर सोचा, सौदा महंगा पड़ा या सस्ता. बहुत सोचा तो ये जाना, खुशियां तो आती जाती है, दुख जीवन भर का साथी है. खुशियां और आंसू अलग अलग है, दोनों में कोई तोल नहीं. खुशी और आंसू अलग अलग है, दोनों में कोई तोल नहीं. लेकिन मेरे 100 आंसुओं के आगे एक खुशी का कोई मोल नहीं, एक खुशी का कोई मोल नहीं. थैंक यू. I'm speechless. मतलब we all are a fan of you, and since you have already said that the moment आपकी release होगी वेब सीरीज, you have to पहला इंटरव्यू आप मुझे ही दोगे, और हम कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे. नहीं, तब शायद मैं बहुत इमोशनल हो जाऊं, बट it's a promise. My first post-release interview also will be on this platform, and if you allow me, I will come as many times as you call it. This is my favorite platform on Facebook. I'm not active on any group. I don't on Instagram also. Instagram I don't operate. Somebody else operates for me. But on this on Facebook as well, I'm just there because of this group. Most of the times I participate in all the activities. I try to, as much as possible, like and comment on whatever I feel good about. I will try. I'm more in the future, but जितना जब भी टाइम मिलता है तो मेरा फर्स्ट फेसबुक पे मैं ब्ला पे ही आता हूँ. Wow. Neelshri is dancing in comments now, I'm sure. हम आपके साथ हम हंस भी लिए, हम इंस्पायर भी हो गए, हम रो भी लिए, और अब अंत में हम नाच भी लिए. What a session. Amazing. This was like,
दिस वॉज इनिशियली मेरे बहुत दिल के करीब था, और अब मतलब ये एक ऐसी याद बन गई है ना जो हर इंटरव्यू में मतलब आई विल रिमेम्बर दिस वन, एंड अपकमिंग में तो हम विल कीप ऑन एडिंग. सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो. बाकी मतलब आप भी बाद में देखो कि कितने सारे दिल मिले हैं आपको. But I don't think so we have any questions, so we'll wrap it up here, and all the very best from every member of the group for your web series. And I hope you get, हम तो promote करेंगे ही by default, फाड़ के रख देंगे अपन, but all the very best. Thank you, Sanjana. Thank you, Neelashri, and thank you all the members of the Blabla community. Stay safe, stay blessed, be positive, keep smiling. ये दिन भी चले जाएंगे, फिर से मिलेंगे हंसते खेलते. Bye guys. Thank you. Bye.